दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को हुजूर जी की आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा और हुजूर जी कह क्या रहे हैं वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी संगत है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो पहले आप ये सेटिंग कर ले, आपको सेटिंग बताता हूँ। जब आपके भीतर वीडियो आएगी तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर साइड पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ये कैप्शन लिखा हुआ है, कैप्शन पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करके यहाँ पर देखो कितनी लैंग्वेज वगैरह है, जर्मनी है, इटली है, जापानीज है, कोरियन है, स्पेनिश है। आपने हिंदी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद देखना शुरू करना है। I'll try to keep it brief and try to keep it simple. First of all, from a strategic perspective, I think please understand strategy is a tool. It's a tool to realize a vision or an aspiration. A strategy is simple when the vision and aspiration is simple. And unfortunately, a lot of our pharma marketeers make this a fairly complicated affair. And a lot of our vision and aspirations, unfortunately, also are very revenue and profitability centric. That's not how it is. If you look at leading corporations around the world, their vision is never revenue. It follows. Look at Nike, they celebrate great champions. Look at Disney, they build products where dreams come true. Think NASA, they wanted to put a man on the moon. Simple, one-line statements, puts an aspiration that really motivates, really centers the organization. I'm talking about some of these visions that are at the org level, but there is nothing that cannot be translated at a brand, at a division, at a cluster, at a business level, right?